हेलो हेलो, यहाँ पर मैच खेला जा रहा है बी लाइन और डीप सी फुड टीमों के बीच। दोनों इस्लामी बल्लेबाज नौशाद और शफीक क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज के रूप पर जो बड़ी शॉट मारने की पूरी क्षमता रखते हैं। पिछली मैच पर बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया था नौशाद ने टीम डीप सी फुड की ओर से। देखना कि इस मैच पर किस तरीके की बल्लेबाजी को अपनाते हैं। इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर स्ट्राइकर छोर पर शफीक पुन्नानी। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड पर एक बेहतरीन शुरुआत हुई है यहां पर डीप सी फुड की बल्लेबाजी की। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का न्योता दिया था टीम केपलाइन के कप्तान ने टीम डीप सी फुड को। उस न्योते को स्वीकार करते हुए यहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए, एक तरफ से शफीक पुन्नानी और एक तरफ नौशाद कीवी, कोई कसर नहीं छोड़ रहे यहां पर टीममेट्स और ऑडियंस को मनोरंजन करने की। इस उम्मीद के साथ गेंदबाजी पर तब्दीली। दूसरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए उमैर अली, द मैन हु हैज रिप्रेजेंटेड UAE इंटरनेशनल क्रिकेट, हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बॉल ओवर नंबर 2 फॉर टीम केपलाइन। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है उमैर अली, जिन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला हुआ है UAE के अंदर। इस बार छोटी रही गेंद, खेल लिया था उसको पॉइंट की दिशा पर 1 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा अभी तक नौशाद और शफीक के बीच। रनों के साथ साथ स्ट्राइक को भी अक्सर रोटेट करते हुए बॉलर को कोई सेट होने का मौका नहीं दे रहे। यहां पर जानते हैं कि अगर बॉलर एक बार सेट हो जाता है तो घातक साबित हो सकता है। इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर नौशाद अगली गेंद का सामना करेंगे। दोनों ही टीमें इस लीग मैच की पहली मैच जीत चुकी है। ये उनके लिए दूसरा मैच है। यहां पर मैच जीतने के साथ साथ नेट रन रेट भी देखा जाएगा अगर टीम प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो। इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर नौशाद अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी, बड़ी शॉट की कोशिश हुई थी लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी। गेंद पहुंची सीधा मिड विकेट के फील्डर के पास और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। स्कोर बढ़ता हुआ 16 बिना कोई विकेट के नुकसान के। बहुत ही समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर नौशाद और शफीक की जोड़ी। और एक बार गुड लेग डिलीवरी, इस बार खेल दिया है उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहां पर नौशाद का बल्ला रन उगलता हुआ, बल्ले के लगी थी बीचों बीच और गेंद पहुंची थी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं नौशाद और शफीक, उसको बाखूबी निभाते हुए यहां पर अपनी टीम डीप सी फुड की ओर से। और एक बार उम्मीद हल्का सा दबाव महसूस कर रहे होंगे यहां पर। देखना है किस तरीके से वापसी करते हैं। इस बार फिर से शॉर्ट लेंथ डिलीवरी, खेल दिया था उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड पर। स्कोर बढ़ता हुआ 23 ऑन द बोर्ड। बोथ दिस बैटर्स आर डूइंग क्वाइट वेल फॉर द टीम डीप सी फुड, Shafiq and Naushad, where Naushad has contributed 15 runs, where Shafiq has contributed 8 runs. This bar full toss गेंद
खेल दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरजने लगा है शफीक पन्नानी का बल्ला। दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद उठाते हुए यहां पर बोथ दिस बैट्समैन आर जस्ट मेजरिंग द बाउंड्रीज एंड सिक्सर्स हियर। Once again, Umair to ball his last delivery. This time lofted in the air. गेंद तारा मंडल को छूता हुआ, फील्डर उसके नीचे आए हुए थे, लेकिन भाग्य का साथ मिला है यहां पर शफीक पन्नानी को, वरना विकेट खोने का खतरा जरूर था। देखना है इस जीवन दान किस तरीके से महंगा साबित होता है टीम केपलाइन को। पहला जीवन दान मिला है यहां पर शफीक को। एक कैच करने का मौका जरूर था, लेकिन उतना आसान नहीं होगा सूरज की किरणों के नीचे अपने निगाह को थामे रखना गेंद के ऊपर, जिसके बदौलत कैच ड्रॉप हुआ है पिछली गेंद पर। इसी के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति, स्कोर है 30 बिना कोई विकेट की नुकसान की। अर्थात 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಡೀಪ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿ ಕೇಪ್ಲೈನ್ ದುಬೈ. इस मैच पर अंपायर की जिम्मेदारियां निभाते हुए मनाफ और सुजी, जो कि अनुभवी अंपायर है टेनिस बॉल क्रिकेट के, दाग देनी पड़ेगी इनकी अंपायरिंग की स्किल की। जिस तरीके से फोकस्ड और कंसंट्रेट रहते हैं हर गेंद के ऊपर, वो काबिले तारीफ है। और एक बार गेंदबाजी पर तब्दीली, नए गेंदबाज के रूप पर परिचय किया जा रहा है केपलाइन के ओर से रोहान मुस्तफा, और एक यूएई के इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला हुआ है, ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड प्रीमियर लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस टाइम ब्लॉक होल डिलीवरी rattles the stumps of the batter. नौशाद केवी, शफीक की पारी की समाप्ति यहां पर। बेहतरीन गेंद, ब्लॉक होल डिलीवरी, जिसको रीड करने पर पूरी तरीके से नाकामयाब हुए थे बल्लेबाज। गेंद सीधा टकरा गई थी विकेटों पर। इसी के साथ पहला झटका यहां पर टीम डीप सी फुड को। उनका स्थान भरते हुए नए युवा ताबड़तोड़ बल्लेबाज विपिन का आगमन हो रहा है क्रीज पर नौशाद केवी को जुड़ते हुए। एक स्टार मुकाबला होने का पूरा संकेत रवाना करता हुआ ये मैच जो खेला जा रहा है ग्राउंड नंबर 2 पर, स्टार बल्लेबाजों से बना हुआ। दोनों ही टीमें आमने सामने इस बेजॉयस चैंपियंस कप 2025 पर, जहां पर 44 कॉर्पोरेट टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 16 टीम इसमें क्वालिफाई करेगी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए, जहां पर हर टीम जो है 2 लीग मैचेस खेलेगी। यहां पर मैच को जीतने के साथ साथ नेट रन रेट जो है मेंटेन करना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा टीम को, तब जाके क्वालिफाई कर सकती है प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। इस उम्मीद के साथ दोनों ही टीम यहां पर जान लगाते हुए जानते हैं कि हर एक रन, हर एक बाउंड्री, हर एक विकेट यहां पर कितना महत्वपूर्ण होता है। हर एक रन जो है मैच के फैसले को बदल सकता है। इस उम्मीद के साथ दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, विपिन कृष्णा और नौशाद केवी। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए रोहान मुस्तफा, जो कि यूएई इंटरनेशनल क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं और बहुत सारा कंट्री क्रिकेट खेला हुआ है। डेजर्ट वाइपर को रिप्रेजेंट किया है, शारजा वॉरियर को रिप्रेजेंट किया है ILT20 पर। इस बार केपलाइन टीम की ओर से गेंदबाजी का, तो इस बार खराब गेंद, लेंथ से भटकी हुई गेंद खेल दिया था उसको सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा पर सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस सिक्सर के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 38, 1 विकेट की नुकसान पर। यहां पर कमेंट्री में तब्दीली। आई वुड लाइक टू कॉल माय को कमेंटेटर हसन टू कंटिन्यू द कमेंट्री इन इंग्लिश. ओवर टू यू. That says a helicopter one
Fielder chasing the ball, but he couldn't stop the ball inside the line. Now the umpire is checking whether it is 6 or 4. Umpire is taking the help of third umpire here. He wants to clear that the ball dipped inside the line. Now it's crossed the line. He's checking with the third umpire that, but the shot that was hit by the batter. What a shot that is. Helicopter. That was a low Yorker. It's not easy to play that kind of a shot. Only some particular player, the quality player, that can release this kind of a shot. He waited for that Yorker, make himself a little bit room, and he played up, swing the bat, good with the wrist, and the ball travelled till the boundary line. Now the third umpire is checking whether it is 4 or 6 runs. Before this ball, score was 2.4 over 38 for loss of 1 wicket. The match playing game between Deep Seafood versus Capeline Dubai. Naushad KV, the star batsman of Deep Seafood, is taking all the responsibility of the batting lineup. He's playing 21 not out of 8 balls. From the third umpire, it's 4 more runs. It bounce, 1 bounce for 4 runs. End of the over number 3. 42 on the ball for Deep Seafood. The current run rate is 14 point, exactly 14. Naushad KV and Vipin Krishna, they are in the middle. Rohan and Umar Ali, they are both from the same team. They played for the UAE team. This time, what a connection of the bat. Swing the bat and ball travel over the row for 6 runs for the Deep Square Leg region. The fielder became a spectator. There's no chance to stop the ball inside the ring. And what a shot that is from Naushad KV. What a start to start the good first over. The very first ball.
Lofted again, now over the wicket keeper's head. 1 bounce, 2 bounce to the short third man failure. Meantime, failure to collect the ball. Batsman easily got the single and 1 run in the total again. 49 on the board. 3.2 overs completed. One bounce to the fairless square of D square leg region, and it's a good start from the fielder. Lock हो गया. ये रन बोलो ना. Out score it or Irfan भाई. आदिल score कार्ड. Match plan. Five. 3.3 over complete, 3.4 over completed, 51 for loss of 1 wicket. Deep Seafood, they are in a very good position. Under the run rate of 13.91, they lost only 1 wicket. The top order batter in the middle, Naushad KV and Vipin Krishna. Naushad KV is very impressive, played 26 not out of 10 ball. Gokul this time to Naushad KV. Good comeback from the bowler, not giving any room for the bowler. He found some extra bounce there, and batter just satisfied with the single. Last ball of the over. 52 on the board. Gokul. The wicket guard this time, fairly coming underneath it, but ball landed and safe for no man area, and 1 bounce to the fielder. Good quick run in between the wicket handers, given him out. What a collection that is from the bowler. Good piece of a fielding there. Good arm and straight to the bowler, and bowler not doing any mistake to collect the ball and blow the stumps. Before that, the batter was just outside the line, and umpire, no hesitation, given it out. So run out, and Deep Seafood losing their second wicket in the form of run out here. 53 for loss of 2 wicket after completion of 4 overs. As I said, my co-commentator has explained that Capeline Dubai, they have a good batting lineup. If you put some good score, then you can defend that one, because they have a very good batting lineup. They have all the experienced player in their squad. They played so many matches in this format. They played for the international UAE team. Omar Ali and Rohan, they both are from the same team. They have a capable to chase the run. So you put some good score on the board to defend these two batters, especially that last 6 ball left from their innings. 53 runs, not that much impressive in this pitch. The flat pitch, this is always helpful to the batter, and wind is now helping to the batting direction, and just the connection is required with the full face of the bat. The ball will travel with the help of wind. You have to do some good timings here. If you have a good timer of the cricket ball, then that will be the benefit for you. The discussion going on from the opposition team, who will bowl the final over? Yeah, this is very important, because the depth over always the important. Now, that's not that much danger now. Deep Seafood, they only score 53 runs of 2 wickets. The final over, if it is controlled over, there might be 60. That will be the good result. That will be the good sign for Capital Light. Capeline Dubai. 6 ball left from their innings. The settled batsman is on a strike now.
Finally, the captain want to go with Akash Shetty. He's on a bowling mark. The very trusted bowler, the depth bowler for Capeline team. The very experienced bowler, jersey number 24. Akash is on a bowling mark now. Vipin Krishna is on a strike. White ball. 1 run in the form of extra. 54 on the board. Back-to-back whites. Pressure on the ball. What might be is in his mind? What might be he thinking? He want to keep the ball away from the batter, not to give easy room for the batter to swing a bat. So that's the reason he's the back-to-backs wide. After that, that's a juicy full toss to the batter. You're giving the weight or the opportunity to the batter to go on. That's a sign gear for the bowler. The batsman was waiting for this run conceding ball. You're in a depth over. You should have to bowl the very best over. You're playing in a big platform. This is the biggest contest of the cricket from the Bejoice, where I've seen in the UAE. This is the big contest, so you have to understand the situation. Very good comeback. Very good comeback. Batsman was not accepted this length. That was a full length away from the batter. The batsman was predicted to go on for the long on region, but it keeps away from him. Dot ball straight to the wicket keeper. Third time in this over. Shetty. What a bowling, what a bowling. Look at the body language of a bowler. He got the confidence now. Now the pressure on the batter. Back to back dot ball. You have to understand, you're in the final over. You have only 3 balls left from your innings. So you have to put some score on the board. You're playing against a very big team. They have a good batting lineup as well. 61 run as per my prediction. This is really not impressive. You have 3 balls. Down the track and that's a drop catch and 4 more runs inside the line. Fielder was just bit up in the circle for. If he stepped a little bit close to the boundary line, he might be taken that one, but he tried his best. Unfortunately, the ball take the help of wind and travel over the boundary line. 1 bounce to the boundary line for 4 more runs. .4 overs completed. They have only 2 balls left from their innings. 65 on the board. Akash Shetty. Still now, not a bad delivery bowled. 12 on 4 balls. Good bowling. Clever ball and misfire from the fielder. There's a fumbling and batter. Go for just for a 1 run. There is no chance for go for a 2nd run. Last ball of the inning, 66 on the board. If this batter deal with the 6, the total will be 72. If this will be the dot ball, 67 will be the target. Akash to Vipin Krishna. Yes, exactly. That goes over the rough for 6 and what a style finish in the last ball of the over. Look at the frustration with the captain. He's saying discussing with the bowler that's really wrong ball. That you have to bowl the block holes. Definitely the last ball. Every batter will go for the big one. And you give the opportunity to him on the pad. It was on the slot. And batsman, this time not doing any mistake, clear the ball on the rope and took the target on 73 for Capeline Dubai. Yes, Mr. Ishad, what do you think? The 72 runs, the 73 the target for Capeline. They have a good batting lineup. Do you think this is this a defendable? I think it's very difficult to say anything at this point of time. This question can be only answered when the Capeline team comes to bat.
when they bat, because they have a very good batting side as well. I've seen a couple of international UAE players who have a huge experience in this venues are playing for Capeline. So if I feel that Deep Seafood has shown some disciplined bowling with the line and length, they have always have a chance to defend the score. Only thing they have to target for a wicket in the crucial intervals. That's only the give upper hand to the Deep Seafood. That's what I can say here. Well said, Ishad Bhai. Only wicket will help to the opposition team. If you are defending the left 72, it's not a big target at all in this platform. But if you got the early wicket, I would like to request the captain of the batting side, please send your opposition, your opener pair to onto the field as soon as possible. Please send your to opener batter. And I would like to request the captain of the fielding side, please restrict your field as soon as possible. We have a lack of time, so your support is much needed to cover that shortage time. We're already running behind the given time, so we have to catch up the... Yeah, we are already running behind the time, the given time. So we have to cover that time. So we need your support for the both captain. We would like to request, and also with the on-field umpire, please proceed the match as soon as possible. Okay. He has played for Desert Vipers. He has played for Sharjah Warriors. I don't know whether it's a new one or the old one. एक बड़ा मुकाबला होने का पूरा संकेत आना करता हुआ यहाँ पर क्वींसलैंड स्टेडियम का ये मैदान, जहां पर दो बड़ी टीमें, एक तरफ है डीप सी फूड और एक तरफ है केपलाइन की टीमें। पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन 72 रन बनाकर 73 रन का लक्ष्य है। 30 गेंदों के आगे टीम केपलाइन के आगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले दो सलामी बल्लेबाज केपलाइन की ओर से। एक तरफ है रोहान मुस्तफा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अनुभव रखने वाले बल्लेबाज। देखना है इस टेनिस बॉल क्रिकेट पर किस तरह की बल्लेबाजी की भूमिका निभाते हैं। इस उम्मीद के साथ पहली ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए शुहेब सामना करेंगे गोकुल। एक बड़ा मुकाबला होने का पूरा संकेत रवाना करता हुआ, कोई शक नहीं है कि यहां पर स्टार खिलाड़ियों से बड़ा हुआ दोनों ही टीमें आमने सामने इस लीग मुकाबले पर जीत के लिए पूरी मेहनत करते हुए। जानते हैं कि हर एक रन, हर एक मौका कितना अहम होता है इस मुकाबले का। इस उम्मीद के साथ शुहेब गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अंपायर से मार्क लेते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट होकर गेंदबाजी करेंगे गोकुल को। राइट हैंडेड बैट्समैन गोकुल सामना करेंगे। शुहेब का पहले ही गेंद खेल दिया था उसको मिड विकेट की दिशा पर। विपिन वहां पर मौजूद, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर जोकिन बरी हो सकती थी। शुरुआती ओवर पर कोई जोकिन लेने की जरूरत नहीं थी वहां पर केपलाइन को, कहा क्योंकि अगर यहां पर एक विकेट खो देती है टीम केपलाइन तो आने वाले बल्लेबाज दबाव पर आ सकते हैं। इस जहन में लेकर जिम्मेदारियों को समझकर खेलना पड़ेगा यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को टीम केपलाइन के। इस उम्मीद के साथ स्ट्राइकर छोर पर और एक बार गोकुल सामना करेंगे शुहेब का। एक बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी खेलना चाहते थे उसको ऑन साइड पर, बल्ले पर गेंद आई नहीं, इसका मतलब रन भी आई नहीं। डॉटेड डिलीवरी आता हुआ, 2 गेंद 2 रन बिना कोई विकेट की नुकसान की। एक खड़ा मुकाबला होने का पूरा अंदेशा है क्योंकि स्ट्राइकर छोर पर गोकुल और
नॉन स्ट्राइकर छोर पर रोहन खड़ा है। तीसरी गेंद ओवर पिच डिलीवरी, इस बार एक मौका जरूर था वहां पर मिड ऑन के फील्डर के पास कैच को लपकने का, लेकिन भाग्य का साथ यहां पर बल्लेबाज गोकुल के पलड़े में। देखना है इस जीवन दान का किस तरीके से फायदा उठाते हैं यहां पर गोकुल आने वाली गेंदों पर, और देखना है कितना महंगा साबित होता है जीवन दान गोकुल का। इस पिछले गेंद पर एक कैच छूटा था उनका मिड ऑन की दिशा पर। इसी के साथ स्ट्राइकर छोर पर रोहान, टीम के प्लान की जान और शान रोहान स्ट्राइकर छोर पर सामना करेंगे अगली गेंद का। क्रिकेट पर भरपूर अनुभव रखने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी है रोहान मुस्तफा, यूएई इंटरनेशनल टीम के कप्तान रह चुके हैं। डेजर्ट वाइपर्स और शारजा वॉरियर्स ILT20 पर खेलने का अनुभव रखने वाले बल्लेबाज। देखना है इस मैच पर किस तरीके की प्रदर्शन देते हैं। इस उम्मीद के साथ रोहान सामना करेंगे शुहैब का। पहला गेंद सामना करेंगे इस इनिंग्स का रोहान। ओवर पे डिलीवरी, कलाइयों का इस्तेमाल, पॉइंट की दिशा पर कैच लपकने का, और एक मौके को गवाते हुए यहां पर भाग्य का साथ फिर से बल्लेबाजों के पलड़े पर जोखिम भरी हो सकती थी अगर विकेट खोती, तो यहां पर बड़ा विकेट था। डीप सी के अंदर एक बड़ा सा मछली शिकार करने का मौके को गवाते हुए यहां पर पॉइंट के फील्डर दूसरा जीवन दान टीम केपलाइन के बल्लेबाजों का। और एक बार रोहान सामना करेंगे शोएब की चौथी गेंद का। इस बार कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया उसको हवा पर, सीधा निशाना, पक्का निशाना, बड़ा छे। यहां पर रोहान मुस्तफा का बल्ला गर्जन करता हुआ, बल्ला करेगा गर्जन तो रन आएंगे आधा डजन। पहला सिक्सर टीम केपलाइन के इनिंग्स का। इस 6 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 11, पहली ओवर की आखिरी गेंद बाकी रहते हुए। What a start here for team Capeline, the dream start I can say here for Capeline. This time good piece of running between the wicket, but there is a fumble, unnecessary call from the danger end, which results in the losing of wicket. मैं क्या पूछना चाहता हूं मैं को कमेंटेटर हसन, do you think this wicket will be a crucial and turning point of this match? What do you say? Exactly. I'm not happy with those two batters' communication. That's unnecessary. You already got 12 runs and you know the value of your wicket. That's a suiciding yourself that you're mowing. You just throw the wicket to your opposition without any effort. If the fielder is collecting the ball, you're looking for the run. This is unnecessary. This might be a turning point. One more UAE international cricket player. He's in the middle. He's joining another international cricketer, Rohan Mustafa. Umer Ali is joining now. Exactly, as my co-commentator said, this seems like the Capeline, this deep sea seafood playing against the UAE team. It looks like the both batter played for the UAE team. They are in the middle. That's a good work how to do for the bowler of deep seafood. They have to deliver some good ball. Every run conceding ball, you will be punished. Whipping, not very experienced from the side of DC Ford. The captain trusted with the bowler and he bring him to the attack for the great batter, Rohan Mustafa. He's on a strike now. Whipping will continue, the all-rounder from deep seafood side. Second over in progress, 11 on the board. वो सामने राइट हैंड नहीं राइट हैंड Right hand, left hand combination here. Rohan Mustafa, the left hander, is on a strike.
And Umar Ali, another batter, he's on a non-strike, and the big walk to the bowler of Deep Seafood. If you get the success, that might be a very good achievement for the bowler. He can strike, he can celebrate because he knows the value of these 2 wickets. That's why the captain trusted with this bowler. He knows the value, he knows the capacity of this bowler. Vipin, the all-rounder performer for Deep Seafood. The very first ball lofted, fielder coming underneath it. Oh my words! A shot boy! Look at this one, look at the celebration. Everyone is gathering for this wicket. Rohan Mustafa putting his head down, and he's not happy. He's connected with the bat, but ball not cleared. It was opposite to the wind. Ishad bhai, I just want to ask something about the shot. Is that the wrong shot, or that might be? I think he didn't get enough bat on it, and also he tried playing against the wind. That was where he just blocked his mind and played it right to the fielder side. That's what I guessed. The initial wicket of Gokul will play a crucial turning point to the team Capeline here. They have thrown a wicket for unnecessary run. That's what I can say here, Hassan. Well said, Ishad, and yes, look at the captain. What a good call from the captain. He knows this bowler can generate some extra bounce. He can put some pressure on the batter. Definitely, the batter will go for want to deal with the 6 because these 2 batter was very experienced. That's why the bowler was clever. He didn't mix any face on it. It was some kind of a slower with extra bounce, and he striked. And he got a success in the very first ball of the over. 1.1 hour completed. 12 for loss of 2 wicket. Vipin will continue. Batsman Kun? What a line that is. Really impressive. Ishad bhai, look at the bowling accuracy. What a line, what a land that is. Full length and keeping away from the batter. The batsman is just swing the bat, but there is no connection with the ball and bat. Straight to the wicket-keeper gloves. 2 dot balls in the crucial moment. This is called a turning point over. Vipin. Vinit swinging the bat again, just a swing and to the wicket keeper. No connection. Back-to-back dot ball. Pressure on the batting side. Another very experienced batter waiting for his opportunity. The Vinit young player should have to rotate the strike and bring him the strike. That might be a good. That's what he really thinking for. He found the fielder there, and he finally got the single, and he bring the man in on the strike. Umar Ali, he's on a strike now. He will face the first ball of his innings. After he lost the partner, Rohan Mustafa, he have to do some work here. He have taken the responsibility of the batting side for Capeline Dubai. The same way and the same fella and the same bowler. The 2 men who play for the international team here in the Bejoice Cricket Club in the Queensland Stadium. Disappointed every crowd. The both batter has been departed. They're back to the pavilion. Celebration going on from the side. Deep Seafood team, look at the celebration. The dugout is happy. The coach is happy. I appreciate the captain's call. What a time to bring the wicket taker bowler. Vipin is the all-rounder for his team. He bring the man on to attack when the 2 best batter from the opposite side was in. Then he took that 2 man, and the both are without any noise back to the pavilion. Gokul, another hitter, master blaster, back to the easel, joining the Jisno, the new man in.
Just a defensive stroke. It's a glance. Just for single. Looking for second. Quick run in between the wicket. चेंज करेगी देखें विनीत एंड नहीं ये नहीं ये तुम्हें इसमें देखो बना वो डॉट उनके उसमें एक ऑलरेडी डॉट है नाम में वो नॉट आउट दिख गया मैं भी कंफ्यूज हुआ था इसमें स्कोर कार्ड में देखो ना वो लाइव में देखो था अभी भी रोहन आउट हो गया नहीं I just want to check the score. You have to do some correction. Rohan is back to the pavilion, but in the scorecard, still Rohan is batting here. You have to. Two over completed, 15 for loss of 3 wicket. Third over in progress. Nizar, what a bowling that is. What a way to start the first ball. If the batsman swing the bat and there's no connection with the bat. 17 ball, 58 runs required. Of course, the batter will wanted to deal with the 6. This time the bowler, what a bowling lineup from the deep seafood. They've only given a 72 runs. 73 is the target, but in that slow target, they are the bowlers that do their job well. They already got the 3 wickets. What a bowling this is! Back to back, 5 dot balls. You are playing the 5 overs limited match. You know the value of 5 dot balls. At least you have to rotate the strike. The dot ball will put you under pressure. The batter, the young player, is struggling to connect the bat. Wanted to go for a big shot, but what a bowling, what a disciplined bowling, as Sharjah said in the beginning, that if you are bowling in very disciplined, you can defend the score. Even it's a low target in this pitch. That 72, not a big total at all if you are playing a 5 overs match. But if your bowler is bowling some discipline, if he not bowling the run conceding ball, that will help the team to chase, to protect, to defend this target. 4 times. Thus, look at the angle of the bowler. It looks like the Malinga Academy. That's is delivered like a Malinga Academy. That's Islam something kind of unorthodox style from the bowler. It looks very nice when he bowls some kind of the delivery. 2 ball left from him, 17 on the board, 14 ball, 56 runs required. Batter is under pressure, batting side is under pressure now. He can only, the singles and double doesn't make any problem for the opposition team. They are in a very good position now. What a ball, what a ball. The 5th one, I just love the way he delivered. Ishad Bhai, what do you say about this? You know the knowledge more than me. The ball which was delivered, the superb Yorker, little bit away from the off stick. I really would like to appreciate both the bowlers. One is Vipin Krishna, who bowled 1 over 3 run and 2 wickets. That's the turning point of this match where they got a complete control of this opposite team. We should appreciate Vipin, and it continued with Nizar Mallu, who's having a sling arm action which is restricting the batter to go for any big shot. Their deep seafood as having a complete control of this match so far. If you look at the scorecard, score is 17 on the board,
for the loss of 3 wickets, where the 3 overs are already completed. And required run says 12 balls, 56 runs. If you look at the last 3 overs, the 56 runs looks very much impossible for the Capeline team. But since it's a cricket, we cannot predict the result till the last ball of this innings has been bowled. So definitely we have to wait and watch. If any player starts to dominate, I mean that batter who is inside in the crease, Vineet, if he has become a pocket dynamite, and if he blasts from here, definitely that chance is still remains in the slot of Capeline. That's what we can expect here. There's a change in the bowling end now. The remaining 2 overs will be bowled from the another side as per the playing condition. So new bowler here is Naeem Jatoui, who is one of the finest bowler of tennis ball cricket. I've seen him often playing here in UAE for multiple teams. Naeem, what a delivery, what a delivery that is. बुलेट की तरह निकली थी गेंद. जिस तरीके की रफ्तारी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं नईम जतोई, उसी तरीके की बल्लेबाजी को, गेंदबाजी को बाखूबी निभाते हुए अपनी टीम डीप सी फुट की ओर से. और एक बार दबाव पूरी तरीके से बनाने पर कामयाब टीम डीप सी फुट यहां पर पूरी तरीके से यहां पर केपलाइन के ऊपर हावी होते हुए इस रन चेस पर. और एक बार नईम उनका सामना करेंगे. और एक बार ओवर पिच डिलीवरी, कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है वहां पर बल्ला और गेंद के बीच. गेंद सीधा पहुंची है विकेट कीपर के दस्तानों पर. बेहतरीन डिसिप्लिन गेंदबाजी मैं कहूंगा यहां पर अभी तक का डीप सी फुट के सभी गेंदबाजों द्वारा. लगातार रनों को रोकने के साथ साथ जिस तरीके से विकेट चटकाए हैं वो काबिले तारीफ है. वही एक चीज है जो इस मैच पर उनको पूरी तरीके से काबू हासिल करने पर सफल साबित किया है. अभी सिर्फ औपचारिकता यहां पर बाकी रह गई है इस मैच को जीतने की. टीम डीप सी फुट को जिस तरीके की गेंदबाजी चाहते थे टीम के कप्तान, उसी तरीके की गेंदबाजी को प्रदर्शन किया है यहां पर सभी गेंदबाजों ने अभी तक डीप सी फुट के. और एक बार शॉर्ट लाइन डिलीवरी, खराब गेंद थी, पहले ही रीड कर लिया था उसको, छोटी रही थी गेंद, खेल दिया था उसको फाइन लेग की दिशा पर. पहला चौका यहां पर मैं कहूंगा बहुत देर के बाद आई है, लेकिन बहुत देर मतलब देर हो चुकी है. अभी गेंद ये मैच जो है उनके हाथों से बहुत दूर निकल चुकी है. सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ फॉर्मेलिटीज यहां पर रह गई है इस मैच को कंप्लीट करने की केपलाइन के पास इस उम्मीद के साथ. और एक बार नईम जतोई गेंदबाजी करेंगे जिष्णु को. रिक्वायर्ड रन 39 रन पर ओवर, विच इज इम्पॉसिबल अगेंस्ट लीगल डिलीवरीज. हल्के हाथों से खेलकर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर दिया यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने. यहां पर एक चीज जहन में रखकर चलना पड़ेगा टीम डीप सी फुट के टीम को कि मैच को जीतने के साथ साथ नेट रन रेट जो है अहम किरदार निभाएगी जब टीम प्री क्वार्टर फाइनल के क्वालिफाई करना चाहती है. तो इस उम्मीद के साथ जोर लगाते हुए, जान लगाते हुए यहां पर डीप सी फुट के गेंदबाजी इस बार छोटी गेंद खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर, थमा दिया उसको फील्डर विपिन के हाथ. इसी के साथ और एक विकेट खोता हुआ यहां पर. अब क्या बोलना चाहते हो हसन जी, ये मैच पर कोई उम्मीद बाकी रह गई है केपलाइन के पलड़े में? Not exactly. Everything is possible. Everything is in favor of Capeline. The way they are produced themselves, they introduced themselves. What a way they batted, and the bowler, I should have to appreciate them. The very disciplined bowling, as you said from the beginning. If they started with the disciplined bowling, they can defend this total. Even they are playing against the big batters. They have a very good batting lineup, but unfortunately now the scorecard is collapsed with the 22 for loss of 4 wicket. And fielding also supporting the bowler. What a catch at the final ball, previous ball taken from Vipin, and 22 for loss of 4 wicket after completion of 4 over. Just 6 ball for the formalities. You have to do 51, impossible target to chase on from here on. Very disappointed.
Deep Seaford, they on the time when I go, I think 72 is not a big target for them, but unfortunately I don't know the capacity of the bowler was Capeline, the way they are into the ball and the very disciplined bowling, and they get everything, they give their 100% for their team, and the result is in front of you. The scorecard always is, everything is saying that 23 for loss of 4 wicket after completion of 4.1 over. The final 5 balls to deliver just for the formalities. 50 runs required of 5 balls. After a long run up, the bowlers bowled excellent bowling, keeping away from the batter. There's no footwork from the batter. Look at the body language of the batter. Everything it says that they are slipped away. They lost the chance, the winning chance. And what a way the Capeline team has been played here. 4 balls left from their innings. Full toss, and there's no failed off over the mid-wicket region for 6 runs after deep mid-wicket after a long time. But this will not help anything for the result. 29 on the board after completion of 4.3 overs. 3 balls left from their innings. 44 runs required. But I'd like to remind the Capeline, the team's Deep Seaford, they have to maintain the run rate that will help for the quarter final round. And 2 balls left from their innings. 43 runs required. What might be going with the batter? What he will do? Of course, he will swing the bat. He want to clear at least 2 sixes from his account. Even it's not help for the team, but he want to prove himself that there is a failure, but there is no chance to stop the ball inside the line. 1 bounce for 4 runs. 30 comes up. 36 on the board. 6 है नहीं previous ball. 6 डाले. Beg your pardon, that's the previous one was 6. 36 on the board. Last ball of the innings. Expecting 1 more 6 from this batter to finish the power line from the DC Ford. Clever bowling and end of the innings for Deep Seaford and Capeline. They are striking here, celebrating. They got the big victory against the very finest team in this contest. Deep Seaford, they are surrendered against the Capeline bowling lineup. What a way to deliver. 5 overs, they only given 37 runs and they took 4 big wickets. All the credit goes to the bowling line and the one man from the batting side. He is the one stand for his team. Played a superb knock and they put 72 runs on the board. And unfortunately, Deep Seaford, their journey is going to end in this competition. Thank you for joining and thank you for joining this wonderful cricket, Bejoice Cricket Club, and congratulations for the Capeline team. We will back after a short break.